Good afternoon class. Today we are going to discuss about chapter 2nd, that is structure of atom. Okay students, in this chapter we will basically discuss about the structure of atom, and after talking about its structure we will discuss that how electrons are filled, what are the manner of filling of electrons, and how the atoms are derived, that basically how their structure is derived. There are so many consequences. Okay, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्टूडेंट्स, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस चैप्टर इन 9th क्लास ऑल्सो. आप लोगों ने इस चैप्टर को 9th क्लास में भी पढ़ा है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ कोविड द सिलेबस इज़ रिड्यूस्ड अप टू 30%. कोविड की वजह से सिलेबस जो है वो 30% तक रिड्यूस हुआ है. तो उसमें स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि आप जब सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो वहाँ से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बेस हैं, उन्हें रिमूव किया गया. ओके, एंड फ्रॉम दिस चैप्टर बेसिकली द यू कैन से द थॉमसन मॉडल वाज रिड्यूस्ड, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन वाज रिड्यूस्ड, then discovery of electron, proton, neutron was reduced. Okay, so basically you have to start up with Bohr's atomic model. So students, आपके इस बार के सिलेबस में बोहर एटॉमिक मॉडल से हमें शुरुआत करनी है. बट स्टूडेंट्स, टू हैव एन आइडिया, लेट मी टेल यू, लेकिन स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो जाए उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यू ऑल नो अबाउट मैटर. ओके, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. आप लोग जानते हैं मैटर क्या है? ऐसी चीज़ है जो कि जिसका एक मास होता है और जो कुछ जगह घेरती है. ओके, दैट मे बी एनीथिंग, दैट मे बी चॉक, दैट मे बी डस्टर, दैट मे बी योर सेल फोन, योर टेक्स्ट बुक, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. ओके स्टूडेंट्स, तो 19th और बिफोर 19th century scientists had given many considerations like matter is the particles of matter are like sand like particle. Then there was theory given that atom is the smallest particle. So Dalton had given this theory that atom are the smallest particle, and basically he said that they are indivisible particles. Students, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसने इन्होंने कहा था मैटर एटम आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. ओके, इसमें इन्होंने कहा मेटल जो होते हैं, एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और ये इनडिविजिबल होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस थ्योरी ऑल्सो फेल ऑन, आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू इन चैप्टर फर्स्ट. व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? इट वॉज फाउंड दैट देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. फिर हम लोगों ने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं. एंड व्हाट आर दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स? दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन, they are like proton, they are like neutron, and many more. Okay, we basically have to discuss about these, that is electron, proton and neutron. Okay, now students, after the discovery of subatomic particle, that is electron, proton and neutron, there were many theories given that how they are discovered. Okay, so for this the scientists have go through with the fields in the discovery of electron, that basically it is said that electron was discovered by Thomson. Okay, and so on. So students, what you have to take away with this lecture from here is that it will be your homework to identify that how the electron, proton and neutron are discovered. Students, ये आपका होमवर्क होगा कि आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, if you have studied with me, then I have told you about in 9th class also that what is the cathode ray experiment, what is anode ray experiment, from where the electron and proton are discovered. Okay, and talking about neutron also, that how the alpha particle scattering was done. Okay, so basically you have to go through the previous concept of discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron. Okay, that is alpha particle scattering. तो आपको इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है और इनके बारे में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी है. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिस्ट्री पे आते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें काम किया
हम जिनकी स्टडी करते हैं वो बेसिक 3 साइंटिस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिनकी स्टडी करते हैं, लेट मी राइट हियर, द वेरी फर्स्ट इज थॉमसन, ओके, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल was basically based that the atom is like a sphere, a positive sphere, and electrons are embedded in it. Okay, so the Thomson's atomic model was assumed as like watermelon. तो इन्होंने क्या assume किया कि पूरा एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फेयर है, और इस पॉजिटिव स्फेयर में आई एम ड्राइंग पॉजिटिव, ओके, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ड्रॉन, this is positive. So a atom is a sphere, positive sphere, in which electrons are embedded, जिसमें electrons क्या है, embedded है. It will be better for you to draw like this. इसमें क्या होते हैं, electrons embedded होते हैं. So as you have seen watermelon, what you see, the seeds of watermelon, the black seeds, he assumed them as electron, okay, that he assumed the position of electron as they are embedded in the sphere. तो इन्होंने ऐसा अज्यूम किया. सो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई, बिकॉज इट इज़ सेड दैट द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and there are so many consequences. So okay, so this theory was failed. After that there was occurrence of the second theory, which was based on Rutherford's atomic model. Okay, so students, in Rutherford's atomic model, Rutherford has given a very big go through that he identified that there is positive sphere in the center of the atom. Okay, that is, he discovered nucleus. So Rutherford की थ्योरी में सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की. ओके, बट देयर वॉज ऑल्सो लिमिटेशन, बिकॉज वो इस चीज़ को नहीं बता पाए कि हाउ एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात की जाए तो इन्होंने कहा सेंटर में एक पॉजिटिव मास है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है. सो स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, वो एनर्जी लूज़ करते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेंटर में चला जाएगा, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या कोलैप्स हो जाएंगे. ओके, एटम कोलैप्स हो जाएगा. बट वी हैव सीन दैट एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन हम लोग देखते हैं कि एटम क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो फेल्ड along with great effects like the discovery of nucleus. Now students, talking about the final theory that is given by Bohr's, which is also known as Bohr's atomic model. Okay, so students, Bohr's ने क्या बताया, Bohr's tell that yes, there is a positive charge in the center of the atom. Okay, एक पॉजिटिव मास है एटम के सेंटर में जिसको न्यूक्लियस कहे. Secondly, he said that yes, electron revolve around the nucleus but in a fixed circular orbit. लेकिन इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है न्यूक्लियस के अलाउंग, लेकिन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, एंड दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस, दिस ऑर्बिटल corresponding electron, and this nucleus corresponds proton and neutron. Okay, orbital corresponds electron and nucleus corresponds proton and neutron. तो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर यही है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में पाया जाता है. ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. After that, what you have to study, I have listed here. After the reduction of your syllabus, you have to discuss about Bohr atomic model in detail. Then you have to discuss about the limitations of Bohr atomic model. Then you have to discuss about the particle nature of electromagnetic radiation. Then you have to discuss about photoelectric effect. Then you have to discuss about dual behavior of electromagnetic radiation. Then you have to discuss about Heisenberg uncertainty principle. Then you have to discuss about significance of uncertainty principle. Then you have to discuss about the quantum mechanical model. Okay, from basically from here your chapter will be start. Okay,
from where questions are asked in this chapter, that is quantum mechanical model of atom. Students, concept of orbital and quantum numbers will be given. Okay, concept of quantum number, and then you have to discuss about the shapes of atomic orbital. So here you will see that the atomic orbitals like s, p, d and f. Okay, you will be go through with new concepts. Then filling of orbitals in an atom, how we can fill the orbitals in an atom. For this there will be some principles like Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule of multiplicity. After this we will see the electronic configuration of atoms, basically elements. Okay, and also student, we will discuss about the stability of completely filled and half filled subshell. Okay, so student, this is about your topics which you have to discuss, but I must say before this, prepare the topics like what discovery of electron, proton and neutron, the atomic models, because students in competition I don't think this portion will be reduced, so you have to the idea of this. Okay, that talking about electrons, so it's basically the relative charge. You can talk about that -1, for proton it is +1, for neutron it is 0. So in this manner you have to look for them. Okay, now students, talking about the very first, that is Bohr's atomic model. So let us see. Students, Bohr's atomic model is basically, you can see here, sorry, page is not given, wait. Yes students, talking about Bohr's atomic model, let us go through with this. Students, you are very well known with the fact that atom has a center called nucleus. What you have to always take away with you is this structure of atom. Okay, where in the center there is positive mass and orbital there is presence of electron. Okay, and that is electron revolve around the nucleus in a fixed circular orbit. So students, after seeing this structure, we can say that एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी. ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, इसका एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है और इसकी फिक्स एनर्जी है और इसकी एक फिक्स वेलोसिटी है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बोहर हैज़ गिवन क्वांटाइजेशन कंडीशन. ओके, quantization condition, you can easily correlate it with your earlier concept, that you know that Bohr said that there are cells. Okay, so for n is equal to 1 it will be K cell, for n is equal to 2 it will be L cell, for n is equal to 3 it will be M cell. Okay, so there is the distribution of cells. So basically what is quantization condition is that electron revolve only in those circular orbit for which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. Student, if you are not getting this, suppose what it is saying, it is saying that suppose there is a orbit. Okay, so electron will revolve in a fixed circular orbit. Okay, and basically for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So I am saying, suppose if this is h by 2 pi, then this will be 2h by 2 pi, this will be 3h by 2 pi, this will be 4h by 2 pi. So in this manner electron will be revolved. You cannot find electron in the center here and here and here. Okay, this is not the position of electron. Electron will only found in these circular orbits. Okay, so from here we derive a relationship that, you know, angular momentum is equal to L, and we are talking that it is integral multiple of h by 2 pi, so it will be equal to h by 2 pi. Okay, so students, here n is basically any integer 1 2 3 4, we can assume it as cell number 1 2 3 4. Now angular momentum, that is L, you all know that this is a vector quantity, so L is equal to r cross p. Okay, and we all know P is basically momentum, that is P is equal to mv. So we can easily write L is equal to r into mv. Okay, and it will become r mv sin theta, and putting the value here, that mvr sin 90, we get that L is equal to mvr. हमें यहाँ पे एक equation मिली, L is equal to mvr. Okay, now students, if we put the value of L, then we can get that mvr is equal to nh by 2 pi. Why I am highlighting this? Because it is very important in our further
derivations. So this was the quantization condition. Now students, talking about the fourth, that is, you can see here, while revolving, the electrostatic force between electron and nucleus provide centripetal force. You know, on the basis of the centripetal force, the electrons revolve with respect to the nucleus. So from here we can calculate that the electrostatic force is equal to the centripetal force. Okay, and further we will discuss in our next topics, that is the limitations of our atomic model and so on. Okay, so thank you class.